So Mohit, good morning. Dwaj, Dwajal, good morning. Moni, good morning. Okay. So here we are about to start the session. Let me upload the PDF for today's session. Just give me a minute. I'll upload the PDF for today's session. आज के सेशन का PDF हम लोग जल्दी से अपलोड कर देंगे. So the PDF for today's session has been uploaded. You can download the PDF. आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो. So here we are about to start the session. Shivani, Yashwini, Raj, Red Singh, good morning. Okay. So sufficient number of people have already joined us. Let's start the session then without wasting much time. सीधा देखते हैं कि आज की अखबार हमारे लिए क्या लेके आई है. ठीक है. जल्दी से देखते हैं. So here we are. Let's see what exactly is there for us. Now review plan to open up the international travel. So like there are major concerns regarding the Omicron. Okay. So you should know about this particular like Omicron. This is the new variant which is creating problem, and we have still not able to find whether the existing vaccines will be able to deal with this or not. Okay. So WHO has suggested that this is the variant of concern, means it's a major issue. We have to still figure it out. Okay, so it is more infectious, बहुत ज़्यादा infectious है, ठीक है ना. So ये कुछ प्रॉब्लम है जो हमें समझ में आ रही है, जो हमें देखना होगा. And that's why Prime Minister is thinking that let's review it whether we should open up our airspaces, or you can say flight connectivity with other countries or not. कि क्या हमें आज जो है अदर कंट्रीज के साथ अपनी फ्लाइट कनेक्टिविटी को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा ऐसा बोला है, ठीक है ना. So we have to still wait and watch what the government of India will say. Okay, so right now they are talking about this virus variant, that is B1529, which was found in South Africa, and it's a variant of concern. Okay, WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है. लाइक देर इज नो क्लैरिटी whether the existing vaccines are able to deal with this or not. Okay, so already we knew that second wave, what happened during the second wave. Okay, things were exposed. Now the point is that if we have this variant which can cause reinfection, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये reinfection कर सकता है. Okay, it means that your existing antibodies, they will might not be able to deal with this. आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो शायद इसके साथ काम ना कर सके, ठीक है ना. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखनी है. एंड स्टिल वी हैव टू फिगर इट आउट, क्या इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी. फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड like the officers to coordinate with the states. Okay, see the point here is that health is a state list subject. ये मालूम होना चाहिए आपको. हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक सम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स एज वेल. वी हैव टू मेक श्योर दैट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, स्पेसिफिकली इन द पेडियाट्रिक फैसिलिटीज, ओके, जो बच्चों से रिलेटेड है ना, उनमें मेजरली हमें अब प्रोटेक्शन की जरूरत है. वाई वी आर सेइंग दैट, बिकॉज चिल्ड्रन आर स्टिल नॉट वैक्सीनेटेड इन इंडिया. ओके, हमारे बच्चे आज भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, एंड दैट्स वाई इट्स अ मेजर कंसर्न. ओके, सो अभी देखना होगा क्या इसके अंदर बात आगे बनती है, ठीक है ना. वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच. ओके, सो निकिता, आपका डाउट क्या है? सर स्टार्ट नहीं करी क्या अभी तक? सो आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट, व्हाट आर यू सेइंग. सो यशवनी जोशी सेइंग, सर कोविशील्ड जिन्होंने लगवाई है वो वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करेगी, वेरिएंट चेंज होगा तो वर्क नहीं करेगी. कोवैक्सीन टारगेट्स होल वायरस टू डू, डेफिनेटली वर्क करेगी क्योंकि वो कंप्लीट वायरस से बनी है. यस, डेफिनेटली, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन. ओके, सो क्या पता अब कोवैक्सीन जो है वो अच्छे से काम करें. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट पर्सनली, लाइक मेरे को तो कोविशील्ड लगी है, ठीक है ना. सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग कि हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है, बट मास प्रोडक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके,
सो जो आप कह रहे हो कि कोवैक्सीन काम करेगी, उसका मास प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट है। व्हाई आई एम सेइंग, कोवैक्सीन जो है वो वीकेंड वायरस से बनती है, ठीक है ना। कोवैक्सीन आपके वीकेंड वायरस से बनती है। नाउ टू हैव अ वीकेंड वायरस ऑन सच अ लार्ज स्केल, इतने लार्ज स्केल के ऊपर इतने सारे कोरोना के वीक वायरस लेके आना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ प्रोडक्शन, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोवैक्सीन इज रिलेटिवली स्लोअर देन द कोविशील्ड। कोविशील्ड से बहुत स्लो प्रोडक्शन होता है उसका। ओके, सो दिस डिफरेंस शुड बी नोन टू यू, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बताया जो स्पाइक प्रोटीन वाला एंगल है, ठीक है ना। बट आई एम सेइंग विच इज द व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। ओके, कोवैक्सीन टारगेट काम करेगी, लेकिन कोवैक्सीन में अपनी समस्या है दैट यू कैन नॉट हैव अ मास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोवैक्सीन एट एन अर्ली पेस। इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। कितने सारे वीक वायरस आपको मैनेज करने पड़ेंगे, so we might not have the capacity. Okay, so we'll move to the next part now. Now supreme, like CGI is pointing out few things that lawmakers, they do not assess the impact of the laws, and it was quite visible हमारे फार्म लॉ पास करने में सारा कुछ समझ में आ गया था, that impact was on farmers. Okay, and the way the law was passed without debate and discussion, तो ये सब नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है ना। सो सी व्हेन यू आर हैविंग पार्लियामेंट्री डिबेट, आप जब पार्लियामेंट्री डिबेट कर रहे हो, सो दीज थिंग्स आर हाईलाइटेड। इम्पैक्ट क्या होगा लॉ के अंदर, लाइक इफ देर आर सम डिफरेंसेस, अपोजिशन विल पॉइंट आउट दैट ओके दीज आर द लूप होल्स, सारी चीजें पॉइंट आउट हो जाती हैं। बट द पॉइंट हियर इज दैट इन इंडिया वी आर नॉट हैविंग दिस पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन। हमारे एंड में तो गड़बड़ यही हो रही है कि हम पार्लियामेंट्री डिबेट और डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। ये पॉइंट समझना जरूरी है कि पार्लियामेंट के पुअर परफॉर्मेंस का कितना खराब असर पड़ता है। Now we'll move to the next part. Now Haryana job quota impossible to implement. There is no doubt about it. Okay, why we are saying this? So the industry is saying that where will you get the talent? आप talent कहाँ से लाओगे? So before that you should know this particular point. Haryana, like they have made an arrangement to provide 75% jobs, okay, for locals, where the income per month is less than 30,000. Okay, so for a job where income is less than 30,000 per month, for that in that arena, in that like area, 75% of the jobs will be for locals. This is what they are arranging. The point here is that industry is pointing out that it is difficult to implement. भाई आप पता कैसे रखोगे कि कौन 75 कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। अदर पॉइंट इज दैट लाइक ओके, आपने कर दिया, टैलेंट कहाँ से लाओगे, skilled workforce कहाँ से लाओगे, that's the important point here. And there will be a domino effect as well. Now if Haryana is doing it, tomorrow Punjab, then UP, so it is difficult to implement and it is going to create lot of more problems. Okay, बहुत सारी समस्याएं यहाँ से पैदा होने वाली हैं। So we'll move to the next part now. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या खास इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे। Okay, so Jaipur would be the world's most powerful nuclear plant. Okay, so Jaipur in Maharashtra, now they are going to have this nuclear plant. A French company was given, you can say that they will be constructing it, but the point is that when it is going to start, there is no clarity over it. Okay, कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है, अभी तक इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह अच्छे से शुरू नहीं हुआ होगा। ओके, अर्लियर ऑल्सो देर वॉज सम लोकल इश्यूज, लोकल ओपोजिशन था इस पावर प्लांट को लेके। आई गेस दैट इशू हैज बीन रिजॉल्व नाउ, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं। So as I told you, Haryana job quota impossible to implement. We have already discussed this particular point. Okay. So from field to across the table. Now, like Indian Army is planning a new thing. They are trying to, or they are like looking forward to bring the course. Okay, course to carry out discussion. देखिए, नेगोशिएशन करना आना चाहिए, ठीक है ना, नेगोशिएशन करना आना चाहिए। एंड टूडेज दिस इज एन एरा वेयर यू हैव प्रोफेशनल्स, आपको हर जगह प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो इस नेगोशिएशन को करते हैं। सो इन द सेम वे इंडियन आर्मी, लाइक इट इज ऑलरेडी अ प्रोफेशनल आर्मी, सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ न्यू कोर्स दैट आर ऑफिसर्स दे शुड लर्न, दे शुड बी प्रोफेशनली इक्विप्ड टू नेगोशिएट विद योर एनिमीज। ओके, एडवर्सरीज के साथ कैसे नेगोशिएट करना है, आपके पास प्रोफेशनल एक तरीके से आपको काम करना आना चाहिए। दैट्स द पॉइंट हियर, ठीक है ना। सो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स कुड बी डिलेड टू जनवरी 2022। ओके,
So here we have some news here related to this particular thing. So there are a lot of issues which are pending. Like we want this free trade agreement to be concluded as early as possible. Okay. So जितना जल्दी हम इसको करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा. That's the point here. But still we have to wait कि कब इसको किया जाता है. ठीक है ना? So this is the point here. This is the point here, and like we are in a pre-negotiation phase right now. अभी तो बहुत दूर जो है दिल्ली बहुत दूर है. ठीक है. So this is what is happening. So other than that there is nothing much. कुछ खास नहीं है यहाँ पे. Now Maoist movement on its last legs. This is what this gentleman is saying. He is the, you can say, advisor to the government. He is a retired IPS officer and he has worked against Virappan. Okay. सो वीरप्पन के अगेंस्ट काम करते थे. तो नेटिजन का मतलब होता है जो इंटरनेट यूज करती है जनता. ठीक है ना. पीपल हु आर एक्टिव ऑन इंटरनेट. ओके, दे आर नेटिजन. So Maoist movement on its last leg, this is what they are pointing out. So you should know that the government, they have introduced lot of things. One is coercion, also उन्होंने increase किया है. Coercion increase किया है, plus development भी increase किया है. ठीक है ना. So this is the important point here. Now when you are carrying out development in tribal areas, when you are respecting their rights, उनके rights जो है आप respect कर रहे हो. ठीक है. So we have something called Forest Right Act. So implementation of the Forest Right Act is really very critical to prevent alienation. अब ये ट्राइबल आपसे एलियनेट नहीं होंगे एंड डेफिनेटली लाइक व्हेन दे आर नॉट एलियनेटेड इट मींस दैट दे विल नॉट ज्वाइन दीज नक्सल्स. ये नक्सल्स या माओइस्ट जो है इनको ज्वाइन ही नहीं करेंगे. ओके, दैट्स द पॉइंट हियर और दैट्स व्हाई इट्स अ सक्सेस. सो अपार्ट फ्रॉम दैट द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का रोल है. ड्रोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं. Deployment has increased. Okay, training has increased. So you have Cobra commandos working over there. ठीक है ना. So then Maharashtra police, they also have their commandos active in the region. Okay, so this is how government is working right now, and like in the coming time the Naxalism, the Maoism, it will be eliminated from our soil. Okay, so this is what we are hopeful about it. So this is the point. So there are a lot of things that are there जिन चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं. देखिए क्या है यहाँ पे. ओके, सो हियर वी हैव नाउ 1 in 2 डिलीवरीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल थ्रू सी सेक्शन. ओके, सो एक चीज़ है कि ये सिजेरियन डिग्री जो डिलीवरीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं. Caesarean deliveries normally earlier it used to be carried out in case of complexities. Okay, कहीं पे कुछ प्रेगनेंसी की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तो पहले जो है सिजेरियन डिग्रीज की जाती थी. But right now there is a new trend which is emerging. Okay, a new trend which is emerging which is saying that like due to multiple reasons women are preferring caesarean deliveries. Okay, caesarean delivery prefer कर रही हैं. क्यों? There are multiple factors. Okay, first they are having babies at the later age and increase in vitro fertility and sedentary lifestyle of mother. Like this is also a reason. Other reason is that like hospital factor as well. Now doctors, they are doing solo practices and delivering 20 to 25 babies in a month. Okay, so that's the point here, and you can't like stay awake, so they prefer to schedule an operation. भाई वो खुद ही अपने हिसाब से ऑपरेशन शेड्यूल करते हैं. ठीक है ना. सो इंस्टेड कि भी कॉम्प्लेक्सिटी अगर है, प्रेगनेंसी है, तो कभी भी डिलीवरी के लिए कॉल आ सकती है एंड डॉक्टर्स दे कैन नॉट स्टे अवेक. दैट्स द पॉइंट हियर. सो इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग दैट, आप जो है एक तरीके से दे आर नाउ लाइक यू कैन से प्रेफरिंग कि ऑपरेशन ही किया जाए. ओके, सो दैट्स द पॉइंट हियर एंड दिस इज देयर इज अ सजेशन दैट वी हैव टू ऑडिट दिस. ओके, दैट व्हाई नेचुरल बर्थ डिलीवरी इज नॉट प्रेफर्ड बाय पीपल. सो दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग. सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट कि इसको एकदम से अच्छे से आपको डिलीवर, इसको ऑडिट करना चाहिए. दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग. ओके, सो एनहांस द वायरस सर्विलेंस. दिस इज व्हाट WHO इज सजेस्टिंग. ओके, सो दिस वायरस हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल इन साउथ अफ्रीका. बाकी जगहों को भी इन्होंने वार्न किया है कि आप भी सुधर जाएं. ओके, सो इंडिया साउथ अफ्रीका डिस्कसेस प्लान फॉर ट्रिप्स वेवर. नाउ व्हाई दिस ट्रिप्स वेवर इज डिमांडेड? फॉर द टू फाइट अगेंस्ट कोरोना. ओके, सो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, अगर उसका पेटेंट डाइल्यूट हो जाता है एंड इफ WHO अलाउज इट, इट विल फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. ओके, अब वैक्सीन मास प्रोडक्शन पे हम बना सकेंगे एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट विल कम डाउन. प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपका वो भी कम हो जाएगा. ओके,
So this will be the major benefit, and I'm telling you, if the waiver is given, then there are high chances that we might be able to vaccinate large population as early as possible. सो ज़्यादा से ज़्यादा जनता आप जो है जल्दी से वैक्सीनेट करोगे, उसका क्या बेनिफिट होगा? ओके, देखिए, सी द पॉइंट हियर इज दैट इफ यू आर गोइंग टू वैक्सीनेट इट एट अ लार्ज नंबर, इट मीन्स दैट इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द म्यूटेशन, जो वायरस में म्यूटेशन हो रही है, ओके, उसको जरूर ये कम करेगा। वायरस में म्यूटेशन जो हो रही है, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, इट विल स्लो डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग। आज ये वायरस इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देख लो। Now, leprosy-free Odisha now sees a worrying rise in the cases. Okay, so this is another problem that is emerging. Now, leprosy की बात करें, so it is also known as Hansen disease. Okay, it's a bacterial infection, majorly caused by Mycobacterium lepra. And area of infection is your skin, peripheral nerves, upper respiratory tract, and lining of the nose. Okay. Mode of transmission merely through the like airborne droplets. वहाँ से हम लोग inhale कर लेते हैं इसे गलती से. And there are some symptoms, those should be known to us. Okay. So symptoms क्या होंगे यहाँ पे? Red patches on the skin, numbness in the arms, hands, legs, ulcer on the soles of the feet, muscle weakness. Okay, so this is what is there. Now it usually take 3 to 5 years for symptoms to appear. Okay, अगर किसी को ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो 3 से 5 साल लग जाते हैं सिम्टम्स आने में. But right now, what is the news? So Odisha declared itself to be leprosy free in 2006-7. The cases came down below 10,000. राइट नाउ देर इज अ सडन राइज इन द केसेस. ओके, आज की डेट में एकदम से केसेस बढ़ गए हैं. अब पहले जब केसेस कम हुए थे, देख ओडिशा इट डिसमेंटल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दिया था. आज एकदम से जो है वो बढ़ गया है, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट इज देयर. ओके, सो ये जो है एक तरीके से चल रहा है काम. सो वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच क्या है इसमें बात आगे बढ़ती है. दोबारा आपको अपना एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव करना पड़ेगा. ओके, सो वेरिएंट ट्रिगर्स ट्रैवल कर्व्स ऑन साउथ अफ्रीका. नाउ दिस इज व्हाट इज देयर, और अभी देखना होगा इसके ऊपर क्या आगे इंस्ट्रक्शन आती है एंड व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू like do right now. Okay, so other than that there is nothing much, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. So we'll move to the next part now. Covaxin elicits immune memory to virus. Study is finding this particular point. They are saying that like maybe over the time your antibodies will come down. Okay, लेकिन ये जो मेमोरी है इट कैन लास्ट अप टू 6 मंथ. ठीक है ना. पॉइंट हियर इज दैट एंटीबॉडीज आपकी डाइल्यूट हो जाएंगी. ओके, बट फर्दर योर बॉडी विल बी able to produce those antibodies at the early stage of infection itself. आपकी बॉडी अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन पे भी दोबारा जो है एंटीबॉडीज बना सकेगी. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग दे आर पॉइंटिंग आउट. ओके, सो इट्स अ गुड थिंग. थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक असर रहेगा. दैट्स द पॉइंट दे आर मेकिंग. ओके, सो वेयर वर देयर डोमेस्टिक हॉर्सेज इन एंशिएंट इंडिया? दैट्स द क्वेश्चन. इन 2017 प्रीलिम्स दिस वाज द क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन इस तरीके से रिलेटेड था, घोड़े से रिलेटेड. Now there are some findings. So the major answer to this particular question is no. Okay, because World Atlas says that only animals native to India are Asian elephant, snow leopard, rhinoceros, Bengal tiger, sloth bear, Himalayan wolf, Gaur bison, red panda, crocodile, and the bird peacock and flamingo. Okay, so this is what there for us. ये बिल्कुल क्लियर है कि घोड़ा यहाँ पे नहीं होता था, ठीक है ना. So this is what has been pointed out. What is a legal guarantee of MSP involved? अब देखिए MSP को लेके इतना शोर मच रहा है, तो क्या इसमें डिमांड की जा रही है, ठीक है ना. सो राइट नाउ द कमेटी हैज बीन फॉर्म टू लुक इनटू द डिमांड्स. ओके, सो हाउ मेनी क्रॉप डज MSP सपोर्ट like covers? Okay, so near about 23 crops are there and which are covered here. So ये मालूम होना चाहिए. So other thing is that the costing, how will you calculate the cost? The cost will include the seeds, fertilizer, pesticide, fuel, irrigation. Okay, like hired workers, leased land, all these things are covered. वो सारी चीजें यहाँ पे cover होती हैं, as well as the imputed value of unpaid family labor, वो भी थोड़ा component डाला जाता है, ठीक है ना. So farm unions are demanding that a comprehensive cost calculation must also include capital assets and rental and the interest foregone on own land. Okay, अब कहीं से लोन आपने उठाया हुआ है तो